ओके, हैव यू गिवन द टेस्ट? आपने टेस्ट दिया था सबने? ओके, सो क्या स्कोर रहा रोहित एंड ऋषभ? गुड आफ्टरनून अंकुश। ओके, सो यू आर सेइंग 27 ओवरऑल, ऋषभ? ओके ओके, गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हैव यू एनालाइज्ड देन, और जस्ट डिडंट एनालाइज? एंड रेस्ट अदर अदर पर्सन्स, जिया, अंकुश, समृद्धि, यू हैवंट, जैस्मीन, पूजा, आपने टेस्ट नहीं दिया? ओके, चलिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं जितना टाइम है अपने पास। लेट्स ट्राई इट आउट। थोड़ा पेशेंटली करेंगे, समझ समझ के करेंगे। जिसने भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है वो 1 मिनट का टाइम ले सकता है क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने आप में से पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि कुछ ही लोगों ने, 2 लोगों ने मुझे बोला है सिर्फ अटेम्प्ट किया है। तो रेस्ट ऑफ द पर्संस, इन 1 मिनट दे कैन ट्राई, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। This statement that multi-correct, this is not multi-correct actually. This is a simple integer type question. This is some PPT making error. This is a integer type question. Okay, so question says two very long rods parallel to z-axis with linear charge density lambda passes through, 2 points are given, right? A00 minus A00. So let's try to draw the diagram. Both the points are on the x-axis, so I can say, let's suppose this is our rod, this is our x-axis, and one rod passes through this point, another rod passes through this point. Let's suppose this is our origin. So one point is minus a, another point is plus a, so this is a, this is a. Charge density of both the rods is lambda, that means they are identical rods. Done. Now they are saying a charge minus q of mass m is placed at the origin. If I place a mass here, place a charge here, okay, then it will be in equilibrium. You know this. If I displace it, let's suppose it is being displaced up to this point, and the distance of
movement or displacement is given as y. Done. Now what we need to do, it's a time period of oscillation. Okay. This charge is minus q. Now if I calculate field at this point, let's suppose this point is something I can say P. At point P, if I calculate electric field, the force will be Q into E. So try to calculate the field, lambda and lambda. I think this is identical point, so field will be same. This field will be E and this field will also be E. अरे ठीक है क्या? This field is E and E, both fields will be same, and the value and magnitude of E will be, anyone knows the 2 के formula, लैम्डा बाय, field due to a long wire, यस सर 2 के लैम्डा बाय आर। 2k lambda by r. If I put the value of k, that will be lambda by 2 pi epsilon naught into r. Correct? Now, r is what? R is this distance. And this distance is, if you calculate, that will become root of a square plus y square. That means lambda by 2 pi epsilon naught r. R is root of a square plus y square. This is field. Now, field is identical theta components, and if I take components, you will say this is E cos theta, E cos theta. Obviously, this is theta only, then I'm saying this. And vertical component will be 2E sin theta. एक बार चेक करो कंपोनेंट सही है क्या? यस सर। So net field will be 2E sin theta, and 2E is lambda by 2 pi epsilon naught root of a square plus y square into sin theta. Sin theta, if I say, that will be y divided by root of a square plus y square. Calculation check करते रहना. This is your E net. Now, after knowing E net, the force will be F will be Q into E. If I multiply Q here, that will become, can I say 2 and 2 will be cancelled. It will be Q lambda y. F is equals to Q into E. Q lambda y pi epsilon naught a square plus y square. Correct. And this force will be in downward direction. So I am placing minus. Downward direction means towards the mean position, towards the equilibrium position it is moving. Can I say the acceleration of the particle will be minus a is equals to F by m q lambda y by m pi epsilon naught a square. Now, generally, this displacement y is very small. If I displace it by a very small amount of y, then y square can be ignored. It will be like this. So A is equals to, this is acceleration, I can say. Acceleration. Can I write it capital A? Otherwise, it will be difficult for you. Capital A, because one A is also here. So capital A, acceleration. Acceleration.
Now, to find the time period, I think you know if I compare this acceleration with omega square y, so omega square we can calculate from this. I think you know the equation. A is equals to omega square y. So omega square is coming out to be, after comparison, can you tell me what will be the omega square? Q lambda by m pi epsilon naught a square. E square. Correct, na? This is Yes, omega sir. square. Time period is what? 2 pi by omega. I just need to put the values. T is equals to 2 pi by omega. Omega means root of q lambda divided by m pi epsilon naught a square. Now, if I check the answer, everything is inside the root. So I have to transform it according to it. If I try to transform it, P will be root of 4 pi square will go inside. It will become 4 pi cube, 4 pi cube, m epsilon naught a square divided by q lambda. Now check, answer is saying pi cube is common, say similar epsilon naught m a square q lambda. Everything is similar. I have this term 4 and they have the term x by 8. So can I say x by 8 is equals to 4? In their answer, x by 8 is there. In my answer, in place of that, 4 is there. So x is coming out to be what? 32. Where x is what? 32. This should be the answer. 32 is the answer. Integer type question. Moving further. किसी का कोई डाउट है इसमें? Two thin, similar convex glass pieces are joined together front to front. Okay. And rear portion is silvered such that a sharp image is formed at 20. Okay, rays are coming from infinite. So image should be formed at focus. Correct. When the air between the glass piece is replaced by water, that means initially there was air inside it. Okay. Then the image formed from the mirror is at a distance of how much centimeter? Okay. Object is at infinite.
That is for sure in both the cases. So image will be formed at the focus. So we need to find the focus in both the cases. That will be my answer. If I find the focus, that will be my answer. Okay. Initially, there is air. If I say there is air, then what will happen to these rays when they enter this kind of structure? They will suffer any deviation only after striking this silvered surface. Yes or no? If air is between them, Sir. then these ray will suffer deviation only after striking the silvered part. Yes, sir. That means initially they are saying, question is saying that image is formed at what point? 20 centimeter from the mirror. What does it mean? कि focus is 20 centimeter. अरे क्या ये बात क्लियर हुई कि हमारे जो सिल्वर्ड पार्ट है, फॉर विच सरफेस आई एम राइटिंग फॉर दिस सिल्वर्ड सरफेस इट्स फोकस इज 20 centimeter and this is a concave mirror. If it is a concave mirror, so its radius will be what? 40 centimeter. यहां तक हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर हुआ. नाउ माई अल्टीमेट एम, मेरा जो फाइनल एम है, टू कैलकुलेट दी when water is filled, so it will become behave as a some part of it सर behave as a एक्सक्यूज lens मी and सर। mirror. सर ये यस बेटा. फोकस वाला क्लियर नहीं हुआ। फोकस हाँ, वाला एक बारी और बता एक दीजिए। बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने बोला रेज जब ये एंटर हो रही हैं तो एंटर होने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचने पर कोई डेविएशन नहीं होगा. जब इनमें डेविएशन कब शुरू होगा? जब ये मिरर वाले सिल्वर्ड पार्ट पे टकराएंगी. दैट मीन्स while going inside and while after reflection, this part, which part I am saying, the initial part of the lens has no significance. That means my mirror is behaving as a concave mirror. And in case of concave mirror, if parallel rays comes, like if rays are coming from infinite, image will be at focus. So question is saying image is formed at 20 centimeter from the mirror. That means this distance is what is the focal length of my mirror. Which part? For this reflective part, focus is what? 20 centimeter. That means for my mirror, focus is 20 centimeter. And if focus is 20, then radius will be 40. यस दोबारा सर, से एक हमको बार फिर क्लियर है। रिपीट करूं. नो क्लियर सर। ना? नाउ, तो अब मैंने इसमें वाटर फिल किया. वाटर ही फिल किया है ना. फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से. मैंने इसमें लेंस में वाटर फिल किया. So now this refractive index is given something. This surface is polished. Rays are again coming from infinite. Now listen to me very carefully. If I say what is the effective focal length of this system, that will be the point where image will form. Now it become a system lens plus mirror. Silvered lenses, you have studied about that in classes. So silvered lens बन गया है अभी ये. मैंने क्या बोला? इस सिस्टम की जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी इन केस ऑफ सिल्वर्ड मेरे जो हमारे लेंस होते हैं, 1/f इक्विवेलेंट इज व्हाट? 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर. क्या ये हमें याद है रिलेशन? सिल्वर्ड यस सर। अगेन आई एम रिपीटिंग. fl is the focal length of lens, fm is the focal length of mirror, and f equivalent, you know, this is the equivalent focal length of the system. Now for lens part, I am saying we have to find its focal length
because focal length of mirror we know that is 20 centimeter. It will be positive or negative 20 centimeter. Focal length of mirror, concave mirror na, focal length will be negative. Remember this. Now, 1 upon focal length is equals to, what is the refractive index given? 4 by 3. 4 by 4 3. by 3 minus 1. 1 by R1 minus 1 by R2. आई थिंक ये आपको याद होगा क्या लगाया मैंने, लेंस मेकर लगा दिया है. So if I लेंस continue मेकर it, फॉर्मूला. 1 by f is equals to, can I say 1 by 3? So radius of curvature is 40 for both the surfaces. 1 by 40, 1 by 40, 2 by 40, that is 1 by 20. अरे क्या क्लियर है एकदम? सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कमिंग आउट टू बी Yes. 60 centimeter. Now just put the values. One by f equivalent is equals to 2 by focal length of lens is 60 minus 1 by focal length of mirror. Focal length of mirror is what? 20 minus 1 by 30, 1 by 20, 60, 2 plus 3, 5 by 60. So f equivalent is 12 centimeter. 12. That means L and focus is at 12 centimeter. So if rays are coming from infinity, image will be formed at 12 centimeter mark. 12 centimeter mark. That should be the answer. Answer is what? 12 centimeter. This should be your answer. 12 centimeter. This is a multi-correct question. Multi-correct questions have partial marking, but if you select any wrong option, then there will be 50% negative marking as well. So be very careful in this. Rest of the students read the question actually. Okay. In the given figure, a metallic rod of length L and mass M, okay, slides on two parallel metallic rails. This is very common thing. The magnetic field B is vertically upward. If all surfaces are smooth and rails and rod have zero resistance, then हमें find क्या करना है? Velocity after time t, velocity after time t, after long time velocity will become, after long time velocity will become. Okay. That means two things we have to calculate. One velocity at time t, another velocity after long time. Just look at that. I am just trying to redraw the diagram. Just front view.
let's suppose this is our inclined plane. Obviously, rails are there, conducting rails, and this is our rod, which has some mass m. Okay, and it is forming a loop as well. You can see it is forming some loop as well. You can see some current will flow through this path, right? So one more thing, some magnetic field is also given, which is in the vertically upward direction. This is the magnetic field. Length rod is L. Magnetic. Okay. So first of all, I am solving it for after some time, after long time. After long time, what will happen? This rod will come in equilibrium. It will be moving with some constant speed. Why I am saying so? This rod will start sliding in this direction. On the diagram, you can see. As this rod will slide in this direction, it is sliding due to its weight. Weight is what? Mg sin theta. As it starts sliding, some EMF is induced in the rod. अरे कुछ पता चला? This EMF will be what? If I say V cross B, and if I somewhere if I can write, BVL this end मतलब will become BVL positive, this end will become negative. Okay. So due to this positive and negative, current will flow in this path, something like that. In this loop, current will be flowing like this. Now, in the rod itself, current will be flowing like this. Due to this current, there is a magnetic force as well, which you can calculate using IL cross B. This force was mg sin theta, and IL cross B, if you calculate, there will be a force as well, IL cross B. So these two forces, when balance themselves, balance each other, at that time, this rod starts moving in uniform speed. So first of all, we are trying to solve that uniform case when these two are balanced. Chaliye. So I am not drawing the resistor part here. We can assume that we can calculate current after knowing this. Now I am trying to draw some forces. Okay. First of all, we will calculate how much EMF will be induced in it. EMF. Everyone will say EMF is magnetic field is in the upward direction. I think everyone knows the formula of EMF is V B L. I think सबको याद है. Now, this is going to be the speed V. But what we remember in this formula, each term is perpendicular. These three quantities are perpendicular to each other, mutually perpendicular quantities. I think you remember this. A simple thing that we know, that all these things are perpendicular to each other. So perpendicular to each other, if I say this angle is given as theta, so which component of speed will be perpendicular? I think this component of speed will be perpendicular. This component will be what? V cos theta. अरे क्या ये वाली बात समझ में आई है हमें? VBL में what is the formula VBL? Every quantity V, B and L are mutually perpendicular. If they are mutually perpendicular, B is in Y direction, length is in Z direction. In this diagram, I am saying length is in Z direction. So velocity should be in X direction. So I am taking the X component, that is V cos theta. So what it will become? V cos theta into B into L. ये हमारा आया EMF. जैसे ही EMF आया, कैन आई कैलकुलेट करंट? I is equals to
इसको अच्छा सा लिख लेते हैं, VBL cos थीटा डिवाइडेड बाई आर। अरे क्या ठीक है, I इक्वल टू E बाई आर। जैसे ही करंट निकल कर आता है, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी नो द करंट वैल्यू, कैन आई कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट? मैग्नेटिक फोर्स विल बी ILB, and what is theta? IL cross B it was actually, but theta is what? 90। अरे दिखा क्या, थीटा 90, IL क्रॉस बी, ILB साइन थीटा, थीटा इज 90। सो आई कैन डायरेक्टली राइट ILB। डाउट होगा तो पूछ लेना एक बार। जस्ट हेल्प मी पुट द वैल्यूज। I is VBL, VBL cos theta by R. This is value of I into L into B, L square B square. This is the magnetic force। अरे यहां तक ठीक है क्या हमारा एकदम? Now, what will be the direction of this magnetic force? If I say IL cross B, this magnetic force will be acting in which direction? In horizontal direction, this magnetic force will be acting. And in this direction, we have mg sine theta. What will be the component of FB in this direction? कोई बोलेगा? This component of FB will be cos theta. sine theta or cos Cos theta? theta. Very good. So what? Yes, cos theta, right? So what we can say, that in equilibrium condition, mg sine theta is equals to FB cos theta. Mg sine theta is equals to FB cos theta. I am saying after a long time, they both will balance each other. If they both will balance each other, so I can write in equilibrium, mg sine theta is equals to FB cos theta. Mg sine theta is equals to FB cos theta. Can anyone tell me the value of FB? FB is B square B. B VB square L square square cos theta by R. cos theta by R. Now FB cos theta, one more cos theta is there, so it will become cos square theta. Anything to be cancelled? No. So V is what? MGR sin theta divided by B square L square cos square theta. This should be the speed. This should be the speed. Check with any option. After a long time, what is the answer coming? MGR sin theta B square L square cos square theta. MGR sin theta B square L square. Option C is matching. That means one option out of C and D we have selected, that is option C is correct. Now at any time T we have to calculate. Okay. Can I move on the next page? Only then we can solve it. This page is full. इसमें कोई डाउट है अगर किसी का, तो एक बार बोलेगा जल्दी से। Anyone? Clear? Okay. Very good. Only one person is responding. Rest
पृथ्वीराज, प्रतीक, समृद्धि, अंकुश, क्लियर टू यू ना? ओके, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। मूविंग फर्दर। नाउ I have to draw the diagram again actually. This is again our rod. All the forces you can say same. Now I am not taking long time. Okay. This force is mg sine theta. This is a constant force. It will act. What will change with the time is magnetic force will change with the time. And this is the magnetic force I am saying FB, and what we can let speed is V at some time t. Now we are dealing all these things in terms of time as well. Now, then what will be the EMF? You will say again, the EMF will be the same. V B L cos theta. Current will be I is equals to E by R, that is V B L cos theta by R. This is current. Magnetic force F B is equals to, किसी को याद है पीछे से क्या निकला था? FB अपना मैग्नेटिक फोर्स ILB. If I put the values, I is VBL Sir, cos V, theta. Is this na? This is magnetic force. yes, sir. Cos square Correct, I theta. think. That cos का theta is due to the component na. If I take the component FB cos theta. Now, actually, this is not in equilibrium. That means it will have some acceleration. And if it is having some acceleration, then we can say mg sin theta minus FB cos theta is equals to m into a. क्या ये लाइन एकदम क्लियर है एकदम हमें? नाउ पुट द वैल्यूज. माइनस एफ बी कॉस थीटा इज वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर is equals to m into a. Now we want speed at some time t, so we can write acceleration as dv over dt. Also at the same time, if I remove this m from here, it will come, can I say this m will be cancelled and this will become mr. अरे क्या एकदम ठीक लिखा है मैंने? Now we have to just integrate the things. We have to arrange v dv is there and one v is there. We have to bring it down. So what can I write? dv, this whole term I am bringing down, that is g sine theta. Check for calculation as well with me. G sine theta minus v b square l square cos square theta by mr is equals to dt. Correct now? Now if I integrate it 0 to some time t, initially it was released, then 0 to some time, 0 to some speed v. Let's suppose speed is v.
Now this is the integration part. What will be the integration of this? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? कोई बोलेगा इंटीग्रेशन, क्या ये ln में जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. This whole term will come inside the ln. So ln g sin theta minus vb square l square cos square theta by mr. And if I, अरे, डिफरेंशिएट इट, और डिफरेंशिएशन के बाद लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, डिफरेंशिएशन के बाद लिखूंगा तो जी साइन थीटा इज ए कांस्टेंट, इट्स डिफरेंशिएशन विल बी जीरो, माइनस दिस पोर्शन differentiation of v will be 1, and remaining part I will write b square l square cos square theta by mr is equals to t. dt integration is t. Now I can transfer this whole denominator with t, so it will become b square l square cos square theta t divided by mr of minus, and at the same time if I remove ln from here, because if you check for options they have some e raised to the power, not ln is there, so we have to remove ln. If I remove ln then it will be, क्या सही लिखा मैंने, e raised to the power, and here the term will be g sin theta minus v b square l square cos square theta divided by mr. एक बार चेक करो क्या ये सब लिखा है, e raised to the power, सब कुछ करेक्ट है. Now once again have a look at the options. 1 minus e raised to the power something is coming. Okay. That, that means we need to create somewhere, from somewhere we need to create 1. If I need to create 1, I can do one thing. In the LHS, if I take g sin theta common, g sin theta if I take common, it will become 1 minus vb square l square cos square theta divided by mr is equals to e raised to the power minus b square l square cos square theta t divided by mr. Now this g sin theta can be transferred here and 1 can be transferred there. Okay, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. I think we can transfer it. Can I transfer it directly from here? G sin theta, and I can remove it from here. ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, मैंने क्या जी साइन थीटा ये मिस कर दिया यहाँ पर. Yes, sir. कॉमन लिया ना Denominator. जी साइन थीटा, इफ आई टेक जी साइन थीटा कॉमन, दैट एम आर जी साइन थीटा, दैट विल बी करेक्ट. यस. नाउ आई हैव ट्रांसफर्ड दिस जी साइन थीटा हियर. इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, 1 माइनस 1 माइनस e raised to the power minus b square l square cos square theta by mr over g sin theta is equals to थीटा बाई एम आर जी साइन थीटा. हमें v की वैल्यू निकालनी है. आई टेक v की वैल्यू, देन दिस होल टर्म विल गो देयर. अल्टीमेटली v की वैल्यू क्या आएगी?
mrg sin थीटा कहीं जगह है अपने पास लिखने की। हियर वी कैन राइट। एक बार कोई बोलेगा ट्रांसफर करके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। हियर वी कैन राइट v इज इक्वल टू एम एम आर जी आर साइन थीटा। क्या सही लिख रहा हूं मैं? 1 - यस ई रेज टू दावर -b² L² cos² थीटा। ई रेज टू दावर cos² थीटा टी वन वाज ऑल्सो मैम। देयर टी डिवाइडेड बाई mr डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। क्या ऐसा ही कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या? मैच किया या नहीं किया कोई ऑप्शन? मैच नहीं ईच हुआ सर। ऑप्शन मैच नहीं हुआ। कुछ कुछ मिसिंग है क्या? क्या पार्ट मिसिंग है? एक बार कोई बोलेगा क्या कौन सा पार्ट मिसिंग है? mgr sin थीटा b² L² cos² थीटा mgr sin थीटा b² means this part is okay. 1 - जी साइन थीटा दो। g sin थीटा इज एक्स्ट्रा ना? ओके, चेक द यस। कैलकुलेशन। हम लोग कहाँ से लेकर चले थे? ओके, mg sin थीटा माइनस fb cos थीटा इज इक्वल टू ma। दिस इक्वेशन इज करेक्ट। mg sin थीटा fb की वैल्यू पुट किया इज इक्वल टू m से डिवाइड किया dv/dt। यहाँ तक ठीक है। dv/g sin थीटा माइनस v b² L² cos² थीटा बाई mr इक्वल टू dt। दिस इज ln दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस इज डिफरेंशिएशन 0 b²L² cos² थीटा बाई mr माइनस का इक्वल टू टी। नाउ यहीं पर कुछ हम लोगों ने गड़बड़ किया है। जी साइन थीटा माइनस v b²L² cos² थीटा बाई mr is equals to it will become e raised to the power, correct? Now I have taken g sin theta common, so it will be 1 minus v b²L² cos² theta mr g sin theta, correct? G sin theta if I take here, then it will go there. What we did here, 1 minus e raised to the power this much v b²L² cos² theta upon m r g sin theta. This one here, this one here. Now v is equals to mrg sin theta b²L² cos² theta। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक पकड़ में आ रही है क्या किसी को? नो सर। देन ऑप्शन में क्या दे रहे हैं ये? कहीं से जी साइन थीटा कैंसिल तो नहीं होगा अपना ये? देन 1 विल सर नॉट बी देयर ऑप्शन इफ आई वन एंड टेक टू एलसीएम। सेम जी है। साइन थीटा विल बी क्या क्या? ऑप्शन वन एंड टू सेम है सर, शायद ऑप्शंस में मिस्टेक हो। हाँ मे बी। ऑप्शन का आंसर आ क्या रहा है? ऑप्शन ए एंड सी आ रहा है। ए एंड सी मीन्स ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। ओके,
20 सेकंड के लिए ध्यान से देखो इसको, शायद कोई एरर समझ में आए आपके। कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, अगर हुई होगी तो वैसे तरीका आपको समझ में आया हमें करना क्या था? कोई कैलकुलेशन पार्ट या तो गलत हो गया या फिर ऑप्शन गलत होगा, दो में से एक ही बात हो सकती है। एलन लगा, जी साइन थीटा एक्स्ट्रा बचा। If I want one can be created only by taking, यही वन आ सकता है और कोई आ नहीं सकता, जी साइन थीटा कॉमन लेंगे। We have to transfer it there। कुछ मिला? तो आपको तरीका समझ में आया होगा, आप एक बार कैलकुलेशन घर पे चेक करके देखना, क्या पता मुझसे कोई मिस्टेक हो रहा हो या फिर कोई चीज ऐसी हो, लाइन जो बीच में मिस कर रहे हो। अदरवाइज प्रोसेस इज दिस सेम, राइट? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेक करना, एक बार खुद से सॉल्व करना। जब खुद से करोगे तो दिखेगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो, अदरवाइज वी कैन से ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग फर्दर, okay, this is the column matching, and in this question some one two three diagrams are given, and we need to find, some question is also mentioned there, acceleration of 3 kg block, acceleration of 2 kg block. Okay, first of all we should deal with the first diagram na. In the first diagram, ground surface is also rough, and 2 kg and 3 kg they are also rough. Okay, 2 kg, 3 kg. If I draw some forces on 2 kg, some force is given 10 Newton. Now, can I say some friction will be acting on 2 kg block? Let's suppose this friction is F1. So its reaction will be F1. And on the ground, due to the surface, ground surface, 3 kg block will be having one more friction, F2. आई थिंक यहाँ तक कोई क्लियर, कोई कोई डाउट नहीं है हमें, एफबीडी हमारा बन गया है। नॉर्मल रिएक्शन आई एम नॉट ड्राइंग, वर्टिकल फोर्सेज हैं वो हमारे सब बैलेंस आउट हो जाएंगे धीरे से। So now question says acceleration of 3 kg block. Look at the 3 kg block. Okay, F2 we can calculate. What is the value of F2? F2 is coefficient of friction of surface is mu into n. Mu is 0.2 and normal reaction at this point will be, कितना होगा normal reaction? 20 या 50? 50. 50. So F2 is coming out to be 10 Newton. This is the maximum value of F2 I am saying. What is the maximum value of F2 is 10 Newton. Similarly, I will say what is the maximum value of F1.
You will say again, F1 is mu into n. Maximum value I am saying mu is 0.4 into normal reaction is 20. That means F1 is coming out to be 8. Now, can I say one thing? Maximum possible value of F1 is 8 and F2 is 10. That means 3 kg block will not move. If 3 kg block will not move, what will be the acceleration of 3 kg block? What you will match? Option A will go with 0. 0 means option number U. That means we can write somewhere that A is going with U. Correct. Now for part B, they are saying acceleration of 2 kg and above. Now this 3 kg block is at rest. Then and maximum possible friction for 2 kg block is 8 Newton. That means this 2 kg block will be moving. If it is moving, friction will be kinetic. And if friction is kinetic, then coefficient of friction is 0.3, not 0.4. That means can I say कि हमें फिर से friction force calculate करना पड़ेगा. So F1, which friction kinetic will be 0.3 into n is what? 20. That is 6. The acceleration. 2 kg block net force is what? 10 minus F1. 10 minus F1 is 4. So acceleration will be 4 by 2. That is 2 meter per second square. 2 meter per second square goes with what? Option number Q. That means we can again write B is Q. क्या अभी तक कोई मैच कर रहा है? No, एबीसीडी में sir. से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, जिसमें ए का यू आ रहा A हो, and बी D. का क्यू आ रहा हो? A and D, two options we can focus na. A and D, Yes, sir. two options are possible. Now, another diagram, there is a, let's find out about C. In this diagram, they are saying, figure shows a uniform rod of length 30, okay, mass 3 kg. If mass is 3 kg, so this one will be 1 kg, this one will be 2 kg. The rod is pulled by constant forces 20 and 32 as shown. Find the force exerted by, okay, we have to draw the diagram. Diagram, if I draw, this is the portion. This mass, total mass is what? 3 kg, 1 kg, 2 kg. अरे ये फोर्स किसी को याद रह गया कितना था? 32 and 20 32 Newton. and 20. Can I say the acceleration of this system F net by m? F net कितना है इस पर? 12 by mass is कितना है? 3. That means 4 meter per second square से ये मूव कर रही है. If it is moving with 4 meter per second square, I can draw the FVD of different parts. Different parts means this is 1 kg part, this is 2 kg part. 2 kg part has a force of 32 Newton. It has a force of 20 Newton. And what they are asking, find the force exerted by 20 centimeter part of the rod, okay, on the 10 centimeter part. Now, this 2 kg part may be applying some tension here, P. So what we can write in tension, अरे क्या ये एफवीडी क्लियर हुआ ना अपने पास? टेंशन अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो दैट विल बी टी माइनस 20 इज इक्वल टू मास इज 1, एक्सेलरेशन इज व्हाट? 4. So T is coming out to be 24 Newton.
मैंने फिर से बोला, अगर मैं इस पॉइंट पर ध्यान से देखूं, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर फोकस करूंगा तो मुझे क्या फील होगा? जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एट दिस पॉइंट वन, that 2 if 2 kg is being pulled by 32 newton force, this part of this block or this rod is applying some force or will be applying some force on 1 kg block. That force I have mentioned as T. And this whole system is moving with some acceleration 4 meter per second square. So you can write T minus 20 is equals to mass into acceleration. So T is coming out to be 24. We can check another option. That means option S. So we can say A, B. For option C, it is coming out to be option S. Next diagram is point 2, point 6 kg. Coefficient of friction between all surface is 0.25. Value of force F to drag towards left with constant speed. That means, okay, first I will draw the diagram. Can I draw some FVD kind of thing here? There will be tension T, clear? And towards left, this block is moving. So friction will be acting in this direction, F1. Where this point 2 kg block will move? In the right. So friction will be acting in this direction, F2. This will give some reaction, F2. क्या हमें एकदम डायग्राम क्लियर हो गया है? थोड़ा सा गंदा बन गया डायग्राम। This is our tension T. This is our friction F2. Action reaction pair. Now, one thing that I can say, with constant speed it is moving, that means forces are balanced. Forces are balanced. So I can write here in this column as well. Here I am writing. If you can see, for 0.2 kg block, one force is T, one force is F2. That means T is equals to F2. A constant speed, that means T is equals to F2. Now, what will be the value of F1 and F2? F1 is equals to, everywhere 0.25. Normal reaction is 0.6, 0.2, 0.88. कोई बोलेगा F1 कितना आया? आई थिंक 5 2 ना? न्यूटन। F1 नहीं, F2 आया 5 न्यूटन। F2 आया 5 न्यूटन, ओके। F2 is again 0.25 into normal reaction. Normal reaction is 2. That is 0.5 na, I think. Yes F1 and sir, yes sir, F2 both are clear. 0.5। 0 point, yes, okay ना। Now F1 F2 दोनों निकाला है, मुझे निकालना है F की वैल्यू को। तो F की वैल्यू के लिए मैं किस ब्लॉक पर जाऊंगा? फॉर 0.6 kg block I will write equation for 0.6 kg, that will be F is equals to T plus F1 plus F2. Forces are balanced, speed is constant. So T की वैल्यू कितनी है अपने पास? T की वैल्यू है F2. Put the values. F2 means 0.5 plus F1 means 2 plus F2 means 0.5. 2 plus 1, that is 3. So F is coming out to be 3 Newton. 3 Newton, 3 Newton. Which option? R. That means for option D, it is R. UQSR. UQSR.
ऑप्शन ए। एक्सक्यूज मी सर, 0.6 केजी वाले ब्लॉक पे एक बारी एफबीडी एक्सप्लेन कर दीजिए। 0.6 जीरो केजी वाले पॉइंट पे। सिक्स केजी वाले के लिए ओके। 0.6 केजी ब्लॉक हमारा लेफ्ट स्लाइड कर रहा है। लेफ्ट स्लाइड कर रहा है तो एक तो इस पर फ्रिक्शन लगाया F1 हमारे ग्राउंड सरफेस ने। दूसरा इस पर एक टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग का T। नाउ इफ दिस ब्लॉक इज गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और तो एक ऊपर भी तो सरफेस है 0.2 केजी के साथ, ये जो सरफेस शेयर हो रही है हमारी, ये सरफेस भी तो फ्रिक्शन अप्लाई करेगी। ये किधर फ्रिक्शन अप्लाई करेगी? लेफ्ट डायरेक्शन में। सो तीन फोर्सेस हो गए, F1 F2 एंड T। F2 इज अप्लाइड बाई 0.2 केजी, F1 इज अप्लाइड बाई ग्राउंड सरफेस, एंड T इज बाई दी स्ट्रिंग टेंशन। आपको किसका ओके डायरेक्शन में डाउट हो रहा है? सर, वो मैंने एफ एफ में फ्रिक्शन की डायरेक्शन में डाउट था मुझे थोड़ा। ओके ओके, वी कैन डू दिस लाइक दैट ना, कि हमारा 0.2 के अगर 0.6 केजी बॉटम वाला ब्लॉक, लेट्स नेम इट ए एंड बी, इट विल बी इजी। इफ ए मेरा लेफ्ट जाएगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है यहाँ पर हमारे पास, ड्यू टू द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दिस बी ब्लॉक विल मूव राइट। अगर बी ब्लॉक विल मूव राइट तो इनके बीच जो रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है उसको अवॉइड करने की कोशिश होगी। उसको अवॉइड करने की कोशिश होगी तो बी ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ड्यू टू द रिएक्शन फ्रिक्शन लगेगा इस पर राइट साइड में। F1 हमारे ए ब्लॉक पर किधर लगेगा? राइट साइड। दिस इज द डायग्राम। थैंक यू ओके सर। ओके, वन मोर थिंग। ओके, ट्राई सॉल्विंग इट। आई एम कमिंग बैक इन 1 मिनट।
particle is projected from the ground with an initial speed v at an angle theta with the horizontal. Should we do this question? Yes. Okay, a particle is thrown, some data is given like this. Initial speed u and angle is theta. The average velocity particle between its point of projection, let's suppose point of projection A, and highest point of trajectory, let's suppose this point is V. Between these two positions, we have to calculate what average velocity. Okay, average velocity is what? Can I say displacement over time? और एकदम ठीक है क्या? Between A Yes, sir. and B, displacement over time, I think if we say this is the maximum height h, then this will be r by 2. And this displacement will be, let's suppose displacement is d. Can I say from Pythagoras h square plus r square by 4, right? That is root of h square plus r square by 4. बता देना कुछ गलत हो तो. Time is what? From here to here, time is what? T by 2. U sin theta by d. Yes. हाँ, वेरी गुड. अब हम सारी वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से. वी एवरेज इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4. आर इज व्हाट? आर कितना होता है? U square sin 2 theta by g. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. जी. कैन आई से आर स्क्वायर? इफ आई से, कैन आई से आर बाई 2 स्क्वायर? आर बाई 2 इज दिस मच एंड इसका स्क्वायर. क्या अभी ठीक लिखा है मैंने? एक बार चेक करना. आर बाई 2 स्क्वायर ना, हमें यही तो करना था. आर बाई 2 स्क्वायर करेक्ट ना? डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इज 2u साइन थीटा. दैट मीन्स u साइन थीटा बाई जी. u साइन थीटा बाई जी. कॉमन निकालो इसमें से. अब क्या करना है? कॉमन निकालो. ध्यान देना कैलकुलेशन पे. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर, एक तो यू स्क्वायर कॉमन मिला तो स्क्वायर स्क्वायर मिलके यू स्क्वायर पूरा अंडर रूट के बाहर आया. यहां से साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ध्यान देना, मेरे साथ ही करना, मैं पूरा लिखूंगा नहीं. 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू कैन राइट इट. साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर आया अपॉन पूरा का पूरा 2g बाहर आया डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म अपने पास था u साइन थीटा बाई जी. अंडर रूट के अंदर बचा मेरे पास क्या? साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस Plus 2 cos square theta. 2. इफ आई स्क्वायर इट, इट विल बिकम 4. 4 एंड साइन थीटा कॉस थीटा. कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा. अरे सही है ना? चेक कर लेना एक बार. कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास. जी जी साइन थीटा यू यू. ऊपर क्या बचा मेरे पास? वी एवरेज इज इक्वल टू यू बाई 2 रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा. एक कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया तो बचा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा.
u/2 1 + 3 cos² थीटा, क्या बताना है मुझे? एन बताना है। एन इज व्हाट? 3। अरे ठीक है ना, ऑप्शन चेक करते हैं क्या आ रहा है। एन इज 3। यस सर। करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A long cylindrical rod contains a cylindrical cavity as shown in the figure. This is the okay radius OA OB, नहीं, OA AB BC CD. That means radius is R actually. The current density of the rod is given J naught K cap. J naught K cap IJK. Okay. Now an equal diameter wire with thin insulated coating is inserted in the cavity. Okay. The current density in wire is itni such that net magnetic field at A will be zero. Where is point A? This point A. The value of n. n कहाँ था इसमें? This is n. Okay. Done. ये कैविटी वाला क्वेश्चन है। कैविटी वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, अभी इसमें इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक एक सॉलिड रॉड है जिसकी करंट डेंसिटी J है, इन्होंने ऐसे बोला, और बोल रहे हैं कि उसमें एक कैविटी इन्होंने कट कर दी, सिलिंड्रिकल कैविटी। और कैविटी कट कर दी मतलब उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उसमें एक वायर इंसर्ट कर दिया उसी जगह पर, सेम कैविटी में कोई दूसरा मटेरियल इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद उसकी डेंसिटी वो मुझे कह रहे हैं कुछ n टाइम्स ऑफ पहले वाले की डेंसिटी है। क्लियर है? तो अब मुझे कह रहे हैं कि क्या हो वो n की वैल्यू या नई डेंसिटी कितने टाइम्स हो पुरानी डेंसिटी के, कि ये नेट फील्ड जो पॉइंट ए है वहां पर जीरो हो जाए। अगर मुझे अभी मैं पहले इसको वायर को इंसर्ट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं बोलता हूं डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करूं विदाउट इंसर्टिंग वायर, तो कैविटी वाले केस में हम लोग क्या करते थे, शायद याद होगा आपको। आपको याद है ना कैविटी वाला? सबसे पहले तो फुल रॉड, जो हमारी जो भी वायर है, फुल वायर की वजह से अगर मैं देखूं, तो पूरे वायर की वजह से हमारा जो फील्ड होगा, फील्ड ड्यू टू फुल वायर, आई विल राइट। किसी को फॉर्मूला याद है? म्यू नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, म्यू नॉट/2। okay, I will explain you the exact scenario. For example, this is the wire or this is the center. This radius is r, वायर की रेडियस r है, सिलिंड्रिकल वायर है ऑब्वियसली। और मैंने बोला इसके अंदर किसी पॉइंट r पर, किसी डिस्टेंस r पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम एम्पियर्स लॉ का यूज करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो निकल कर क्या आता था, किसी भी एक आर डिस्टेंस पर, जनरल आर डिस्टेंस पर, व्हेन डेंसिटी ऑफ वायर इज गिवन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैविटी, आई एम जस्ट टॉकिंग सिंपली, एकदम सिंपल टर्म्स में, तो वो फील्ड निकल कर आता था, फील्ड निकल कर आता था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट/2 J×R इन वेक्टर फॉर्मेट। अभी भी मैं अगर इस पूरे, आपको ये भी याद होगा कैविटी के केस में हम क्या करते थे, इस जो कैविटी वाले रीजन में हम दो करंट एज्यूम करते थे। आई थिंक अगर आपको याद है तो हाँ या ना बोल दो, अदरवाइज मैं थोड़ा सा समझाऊं, नहीं तो मैं आगे तेजी से बढ़ूं थोड़ा सा। यस सर, याद है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक को नेगेटिव, एक को सेम डायरेक्शन में लेते थे करंट डेंसिटी के, एक को अपोजिट डायरेक्शन में लेते थे। सेम डायरेक्शन की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड फुल का बन जाता था जो मैं निकालने जा रहा हूँ, फिर एक जो अपोजिट लिया था उसकी वजह से फील्ड निकालते थे, राइट? इसका मतलब आपको याद है, तो हम लोग इसको जल्दी से करते हैं अभी।
Okay, mu naught by 2 J cross R, J, and J cross R, if I say J current density is given K cap, it is given J is equals to J naught K cap. And R, if I say from center, this is our R. What will be the direction of magnetic field at point A then? And angle is obviously 90. So I am writing just J and R. Direction of magnetic field, can anyone tell me at point A using that cross right hand thumb rule, J cross R? This J is what? Current density. And this is given as J naught. So I am writing J naught into R. Direction. अरे क्या डाउनवर्ड आएगा क्या? चेक किया क्या सबने? This magnetic field is coming downward. Now for the cavity part, field due to cavity. सर Again, एक formula मिनट, is mu naught by 2. हाँ, सर ये डायरेक्शन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मूला मैंने लिखा है J क्रॉस R, J क्रॉस R. So current density is in direction K cap. So we will put our right hand in the direction of positive K cap. And R, if I say this is our center, and can I say R is in the left direction? That means minus I cap. That is K cross I. K cross I is J actually, but one minus is already there na, because this is in minus I cap. R is in minus I cap. So if I one preference I will do, I am not doing this using right hand because it will be a mirror image for you. That's why I am not using my right hand. I am trying to explain J cross R. J is in which direction? K cap cross minus I cap. K cross I is what? J, and but minus is there, that is minus J cap. Minus J cap means downward direction. Now field due to cavity. Now cavity means, can I say current density is opposite to the previous one? Previously it was in K cap. Now it is in minus K cap. Correct now? So for cavity part, I am saying I will remove everything. For cavity part, just focus on this part of the cavity. And at point A, I am calculating this is the center. This distance, can I say all these distances OA, AB, whatever it is given same. So I am just taking R here. I will put this R as R by 4 whenever required, if required there. So what will be the field? Again, formula is mu naught by 2 into J naught. And can I say R is again the same? R. Now again tell me the direction. प्लस जी कैप। Think again. This time position vector R is in the right direction and current density J is into the plane minus K cap. It is again minus J cap. Using right hand rule, you can easily do it. Like this is current density into the plane, and in the right side is our position vector of the point A. So it is again coming downward. But I think you must be seeing it in the mirror image format. That's why it's difficult for you. So again, it is coming downward. Now this is due to the original wire cavity. We calculated B1 and B2, or we can say let's name it B1 and B2. Now they have inserted some new kind of wire inside it, which has some different density. This is NJ naught.
So I will say for wire or new wire kind of, जो हमने insert किया. Again I will say field, let's suppose B3 is equals to, I will again delete it for you and try to redraw it. Again, my focus is on this part of the wire. I don't know the direction of current density. I am not thinking about it. I am just saying the current density is n times of J naught. Done. And field I want to calculate at A. Again, position vector will be this much. So I will again write mu naught by 2. Current density is n J naught into R. But question says net magnetic field should be zero. Here it is mentioned. कहाँ ये रहा. A will be zero. Net magnetic field at A will be zero. Two fields are already in the downward direction. So new magnetic field should be in upward direction. Should be. Only then it will be zero. Only then it will be zero. Then I can balance it out. What I can say, B3 is equals to B1 plus B2. Mu naught by 2 n J naught R. Okay, one thing, R is same everywhere ना. सबके लिए R ही सारी डिस्टेंसेस सेम दी गई थी R/4, तो मैं उसमें चक्कर में नहीं पड़ रहा. B1 is equals to mu naught by 2 J naught R plus mu naught by 2 J naught R. कुछ खत्म हो तो कर लो. क्या खत्म हो रहा है? अरे कहाँ गए हम? कोई बोलेगा कहाँ आ गए हम? ये कहाँ आ गए हम? म्यू नॉट बाई टू, म्यू नॉट बाई टू, म्यू नॉट बाई टू, जे नॉट आर, जे नॉट. अरे सब तो खत्म हुआ. क्या बचा हमारे पास? क्या बचा भाई? टू. एन बचा। कोई बोलेगा. यहां से बचा एन. एन और यहां से वन. वन. एन शुड बी टू. आई थिंक दिस इज इट. हम लोगों का टाइम ओवर वरना क्लास ओवरलैप हो जाती है एक्चुअली हर बार. सो आई एम जस्ट एंडिंग हियर. ओके, बाय एवरीवन. बाय सर. बाय बेटा, बाय.